नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश पाटिल। आप देख रहे हैं स्टडी विथ एमपी। एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए। चैप्टर नंबर 7, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ओके। एमसीक्यू, वाई डिड द वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल टर्न पेल एंड डल? तो एयर पोल्यूशन। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट एनकरेज बाय टूरिज्म इंडस्ट्रीज? तो बी, सोनोग्राफी। थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट एज पर देयर टाइम पीरियड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट आएगा अ लो फॉर एंशियंट और एक्सपेंसिव आर्टिस्टिक पीस। उसके बाद 4 नंबर वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिकागो। उसके बाद फर्स्ट नंबर में जो है मुंबई नेचुरल हिस्ट्री कमिटी। और सेकंड नंबर वाला इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट। ओके, मतलब ये आएगा। फोर्थ नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, उसके बाद इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, आफ्टर इट एंशियंट मेमोरीज एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, और लास्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, मे सी। फिल इन द ब्लैंक्स। यूनेस्को has included various sites of natural and cultural heritage of India in the list of the World Heritage. Second, Wildlife Protection Act was enacted in 1972 AD. Third, Bombay Natural History Society is the oldest institution working for the protection of wildlife and enrollment, which was established in 1883 AD. Fourth number, archaeological department is responsible to look after the preservation of national monuments. Fifth number, Department of Archaeological Survey of India has shifted Sangameswar Temple and Papnasma Temple to Alampur of Mahbubnagar district of Andhra Pradesh. State whether the following statements are true or false. First, heritage is an identity of the country. So, true statement. Second, the responsibility of preservation of national monument is given to Environment Department. So, false statement. Third, National Museum is located at New Delhi. So, true statement. Fourth number, Gir Foundation works to conserve environment in non-useful work. So, false. 5 number, Sri Mahavir Jain Aradhana Kendra is situated at Kobai in Gandhinagar district. So, true statement. Arrange following event as per their time. तो फर्स्ट इवेंट आएगी द एक्ट रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। सेकंड, द एक्ट रिलेटेड टू एंशियंट मोनूमेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेस एंड रिमेन्स। थर्ड नंबर में क्रिएशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड। और फोर्थ नंबर, स्वामी विवेकानंद रिमेन प्रेजेंट इन वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एट शिकागो यूएसए। आइडेंटिफाई मी। फर्स्ट, आई एम कंसिडर्ड एज द म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली। तो नेशनल म्यूजियम। सेकंड, आई एम कंसिडर्ड एज द म्यूजियम ऑफ हैदराबाद। तो सालारगंज म्यूजियम। थर्ड, आई एम कंसिडर्ड एज द म्यूजियम ऑफ भोपाल। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। फोर्थ, आई एम कंसिडर्ड एज अ प्रोजेक्ट ऑफ श्री कृष्णा रिवर। तो नागार्जुन सागर। फिफ्थ, आई एम कंसिडर्ड एमॉन्ग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ताजमहल। Question answer. First, why it is necessary to develop positive attitude towards the management of heritage? So it is necessary to develop positive attitude towards the management of heritage because heritage is the pride of our country and people respect our heritage by associating it with their identity. Second number, what has damaged our heritage greatly? So the invention of foreign tribes and our unawareness has damaged our heritage. Third number, which independent business has flourished due to inclusion of tourism as a subject in the field of education? So due to inclusion of tourism as a subject in the field of education, tourism guide as an independent business has flourished. Fourth number, which structural facilities developed due to tourism? The structural facilities like metal, road, railways, water communication, etc. developed due to tourism. 5 number, who has got a platform for the development due to development of tourism? Our varied culture, indigenous art, local art, and the unique feature of the concerned region have got a platform of the development due to development of tourism.
6 नंबर, विच एक्टिविटीज़ गेट एनकरेजमेंट ड्यू टू टूरिज्म? तो ड्यू टू टूरिज्म एक्टिविटीज़ लाइक फोटोग्राफी, हॉर्स राइडिंग एंड बोटिंग गेट एनकरेजमेंट, मोर एवर इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू स्ट्रीट वॉकर्स। 7 नंबर, वाई डू इंडियन एंड फॉरेन विजिटर, सॉरी एम आ गया है वी की जगह पर, विजिटर विजिट द प्लेसेस ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज? तो इंडियन एंड फॉरेन विजिटर विजिट द प्लेसेस ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज टू विजिट, टू एक्सप्लोर एंड टू डू रिसर्च ऑन आवर हेरिटेज। 8 number, when was Wildlife Protection Act implemented in India? Which provision has been made in it? The Wildlife Protection Act was implemented in India in 1972 AD. This act has given a firm status to the national parks, sanctuaries and bioreserves. 9 number, which institutes are doing noble work of environmental preservation in India? The Bombay Natural History Society, Gir Foundation, Natural Club, etc. institutes are doing noble work of environmental preservation in India. 10 number, manuscript of which languages have been preserved in museum? Manuscript of Sanskrit, Prakrit, Adamdi, Pali have been preserved in museum. 11 number, who perform duties to preserve our valuable heritage? So central government, state government, UNESCO and NGOs, non-government organization perform duties to preserve our valuable heritage. 12 number, how can the teachers of schools and college can contribute in the preservation of our heritage? So the teachers of schools and college should inform students about India's glorious heritage and its preservation. This way they can contribute in the preservation of our heritage. 13 number, which places should be taken special care of in monsoon? So places like ancient step wells, ponds, lakes, wells, streams, springs, etc. should be taken special care of in monsoon. 14 number, which ancient lake is situated in Dhodka? So Malav Lake is situated at Dholka. 15 number, which famous step well is located at Patan? So Rani Ki Vav is located at Patan. 16 number, which famous wells of Gujarat should be properly cared for during monsoon? The well of Champaner, Bambario well of Mahemdabad, Navgan well of Junagadh should be properly cared for during monsoon. 17 number, which feeling has India proved in the world? India has proved the feeling of Vasudeva Kutumbakam in the world. 18 number, how has the creation of varied and rich cultural heritage become possible in India? India has three fine amalgamation of different caste, community, religious, tradition, cultures and languages. Because of the creation of varied and its rich cultural heritage has become possible. 19 number, which message of Rigveda shows grandeur and glory of Indian heritage, Indian culture? So the message of Rigveda, let us get good thoughts and vibration from all four directions, shows grandeur and glory of Indian culture. 20 number, which religious influence can be seen on Indian culture? The influence of Hinduism, Islamism, Buddhism, Jainism, Christianity, etc. can be seen on Indian culture. 21 number, what did the torch bearer name of our country? The torch bearer name of our country as Bharatvarsh. 22 number, on which matter did the torch bearer stress upon? The torch bearer stressed upon peace, coordination and universal brotherhood. ओके तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी कि हिस्ट्री का जो वीडियो था यहाँ पर पूरा हुआ। अभी चैप्टर 8 से चालू होगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल ना देखा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सोशल साइंस वीडियो। ओके, सोशल साइंस और दूसरे भी सब्जेक्ट से जैसे स्टैंडर्ड 8 का सोशल साइंस है, 7 का भी हम चालू कर रहे हैं। तो सोशल साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट देखने के लिए सबसे बढ़िया जगह है, सबसे बढ़िया प्लेस जो है वो है हमारी चैनल स्टडी विथ एम पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।